1200
Thank you very much, Aliyah, for joining us. Are we audible enough? Please check the recording. Okay. Before getting into the questions, I would like to ask Sir कि अगर आप अपना introduction करवा दें और what is your startup और किस तरह से आपने एक जैसे कहते हैं market penetration की और what was the idea to get into IoT and space sector? My name is Ali Akhtar. I'm the founder and CEO of Dynasys Networks. Dynasys जो है वो establish हुई थी March 2021 में. So it's been about 3 years and 8 months since we've been founded and we are operational. मेरा personal introduction उससे पहले है कि and this might be interesting to a few of you as well. I graduated from the National University of Science and Technology, NUST, as a telecommunications engineer back in 2010, and I started off my career in the corporate sector, working for a system integrator and a service provider, or different roles. I started off as a systems engineer, moved into product management, moved into commercial management, and then was eventually part of the leadership of the company, which we then ultimately took to the IPO stage as well. It got listed on the PSX. And after having gone through all those experiences, I was very determined to found a startup of my own. और उसके पीछे certain areas थे जो हम टेक्नोलॉजी को देख रहे थे, जहाँ पे गैप नजर आया मार्केट में, एड्रेस those. And एक और रियलिटी थी कि once you start off even at a smaller company and it grows, जैसे जो मेरी previous organization थी जिसका मैं part था, वो एक organization inertia set in हो जाता है towards newer things और एक agility lose होना शुरू होती है. It's a natural consequence of becoming huge. So that all got built in, seeing the market, seeing some needs that could be addressed, confidence in my own capability to be able to do that, having all of that corporate experience, 13-14 साल का backing me up, all the relationships in the market, so it's just वो 2+2 जो है वो एक alignment हुई है, like you want to go for it. That's good to know. What was your like initial journey अगर हम आपकी जानना चाहें या early stages of startup, and what were the hurdles you faced? Okay, so when we founded it, we started off in a 2-room setup. I think typical stories होती हैं जो common है इधर Woodburn Greens में in Islamabad as well. So we started off in a very small space, getting some basic functions up and getting our ideas off the ground. Okay. Ideas कुछ अरसे से थे, but then full on really trying to implement them. One of the areas that we really got interested in was data. The world has a lot of population now, and there's a big fight for resources and decision making, चाहे वो government level पे हो, चाहे वो businesses के level पे, चाहे वो individual level पे. If you want to make smarter, faster, quicker, better, optimize, all the buzzwords and all of the sentiments and the realities that those buzzwords represent, it's all about data. If you have the information, if you know how to use it, how to gather it, how to manage it, how to even manipulate it to
advantage, you're going to come up on top and in front of a lot of other people who can't do that. So पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में back in जब 2021 देख रहे थे number of organizations coming up, startups taking the lead on data related activities, and then बड़ी organizations भी जिसमें मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स भी forefront पे थे, काफी उनकी तरफ से भी निकलता हुआ आ रहा था. So we saw a specific gap जहाँ पे data sensor based elements missing थे, and that led us to IoT. And that led to the entire concept कि हमें पूरा ecosystem create करना चाहते हैं जिसमें हमारे sensors हो, हमारा platform हो, हमारे transmission networks हो, पूरा नया set network create करें पाकिस्तान में, जिसमें जो current networks हैं, for example आप cellular networks example में towers हैं, उसके ऊपर radios हैं, आपके पास cell phones हैं. हमारा concept ये था कि ये towers हैं, इसके ऊपर radios लगे हुए हैं, लेकिन instead of people we create a network of sensors and devices across the country gathering data, and that then gets utilized in whatever manner it needs to be utilized. So early journey में ये सारा हमारा concept बना वहाँ से it grew and eventually became part of NASDAQ, just building a and in fact we are still housed here. Our offices are like 20 seconds walk from over there behind that corridor. We expanded to Karachi, we expanded to Tajikistan, we got licenses there, we got licenses here, so that's been the starting journey to the move here. And then I don't know if any of you know this or not, we just graduated as part of NICAC's cohort 2 as well. So with this सारी journey, taking help, सारे issues जो आए, the partnerships, the support, that all contributed a lot in where we are today. I think subsequently as we go into the discussion, I'd love to tell you where we are today. Very good. अच्छा मैं यहाँ कुछ confused चेहरे देख रही हूँ. Do you have idea IoT है क्या? No. Okay, wonderful. And that just goes to my point that we genuinely saw the gap in the market because the technology is brutal. It goes, मतलब obsolescence जो है ना वो बहुत quick phases में आती है. People love to quote examples of Nokia, इतनी बड़ी कंपनी इतने से रही लेकिन वो प्रोडक्ट आया उससे compete हुआ वो सारा बंद हो गया, BlackBerry, बहुत बड़ी examples हैं. अभी भी टेक्नोलॉजी में इसी तरह की evolutions आ रही हैं. A lot of money goes into it, a lot of intellect goes into it, और फिर वो cycles में पिछली चीजें obsolete होती जा रही हैं. So one of the things I would say is, and the fact that I'm sitting in my CAT, where the AT stands for Aerospace Technologies and the technologies that go around aerospace as well. ये हमारा भी एक point था कि what field do we pick जहाँ पे we feel that the businesses will grow, because ultimately at the end of the day technology and the idea and the fun and working on it has to be coupled with a commercial business plan that is viable, that can be materialized, otherwise it's unsustainable. आप नहीं चल सकते. Big example मैं आपको इसकी दूंगा. Before I come to what IoT is, Starlink का सबने सुना हुआ, I'm sure of it, right? Everybody knows about Starlink, Elon Musk, satellites, SpaceX. Interesting tidbit, I've actually been to SpaceX launch in Kennedy Space Center, Florida. That's the story for another time. It's not the world's first low orbit constellation. You may have or probably may not have known names such as Iridium or Global Star. These were before and a lot of years before actually Starlink became operational. Again, at a time in a manner जहाँ पे उनके business cases नहीं बन सके. So eventually the US government acquired them और वो आज भी constellations चल रहे हैं, but as part of the US government. And then right timing with the right plan, with the right marketing strategy, Starlink came up and people think कितनी innovative है कि वही reality is a bit different from that. So in that context, हमने IoT देखी. IoT what it stands for is Internet of Things. Internet of
things के characteristics मैं आपको बता देता हूँ क्या है. Simply put, you're already familiar with the Internet of People. You are the nodes at the end of a network generating data जो कि फिर through certain technological devices over the network, different servers से आप interact करें, Facebook है, Instagram है, दूसरे लोग हैं, पूरे connections के network बन रहे हैं. In its simplest form, अगर हम आपको रिप्लेस कर दें एज इंडिविजुअल्स और आपकी जगह कोई डिवाइस रखते हैं जो कि ये काम कर सकती है, तो अल्टीमेटली सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जैसे हमने अपने ऑफिसेज में इंडोर एयर क्वालिटी सेंसर्स लगाए हुए हैं. आजकल एयर क्वालिटी थिंग दैट्स गोइंग ऑन. So rather than you being a person there जो कि वो कोई डिवाइस लेके क्वालिटी देख रहे हैं, डेटा इनपुट कर रहे हैं, फिर वो विद नेटवर्क जा रहा है और उसकी बेसिस पे आप किसी से बात कर रहे हैं. There is a device, a sensor that does it on its own, sends out the data far end पे जो भी इसके ऊपर काम हो रहा है वो एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में बात हो गई है. So a lot of the functions, ये ऑटोमेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो बात की जाती है, a lot of the functions eventually are going to be done by network sensors. What IoT in its simplest form is. I mean, there are complex definitions to it, but you know, I'll leave that for another time. बिल्कुल ठीक है. कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर हुए? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो? स्टिल नो? जी जी प्लीज. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे केस में जो IoT के कॉन्टेक्स्ट में at its core it's about gathering data, transmitting data, processing it, visualizing it, analyzing it for better decision making, quicker decision making, accurate decision making. जैसे इस कमरे में अगर वायरस है, डिजीजेस फैले हुए हैं, कोविड का टाइम था, यहाँ भी कोई वायरल इन्फेक्शन फैल जाए, हमने इतने सारे लोग यहाँ पे भरे हुए हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रूम. और इमेजिन दिस इज अ बिजनेस एंटिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं. हाउ डू यू नो यू आर गोइंग टू गेट सिक? हाउ डू यू नो कि एयर क्वालिटी इन दिस रूम इज एट अ सर्टेन लेवल जहाँ पे यू नो गोइंग टू स्प्रेड डिजीज एंड बी आउट फॉर लाइक अ मंथ, पोटेंशियली फेटल एज वेल. वी हैव गॉन थ्रू द पेंडेमिक और वी नो व्हाट इट्स लाइक. But what if there are certain devices that can help you make that decision in an accurate manner, in a quicker manner, and help you plan? कि एक मीटिंग में कितने लोग रखने हैं, 2 मीटिंग रखते 3 देंगे, यानी एक मीटिंग की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाए जिसके डिसीजन मेकर्स बैठ जाए. A very very simple example to give to you. उसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉडर लेवल पे देखें, यही स्मार्ट सेंसर से आप क्या एग्रीकल्चर में यील्ड्स इंप्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं. पाकिस्तान इज वाटर स्टार्व्ड कंट्री, क्या पानी कम यूज करके क्रॉप ज्यादा पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, नर्मदा हिल्स में आग लग जाती है, हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट अर्लियर और इन अ टाइमली मैनर एंड कम्युनिकेट इट. आपकी जो स्मार्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट, डंप ट्रक्स चल रहे हैं, पूरा उन्होंने माहौल भी खराब किया होता है, पता नहीं फ्यूल भी कितना वेस्ट कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती है एक्चुअल एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी की. ये जो आपको जो गार्बेज कैन देख रहे थे ऑन अक्रॉस द रोड, व्हाट इफ द गार्बेज कैन्स कुड टेल द म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन कि आई एम हाफ फुल, आई एम 3/4 फुल, कम take the trash out of it. It's all through sensors and data. और अब जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आप खुद देख रहे हो ये चीजें नहीं हो रही. क्या इन चीजों की नीड है? इससे एफिशिएंसी क्या आ सकती है? इसका बिजनेस केस क्या बन सकता है? When you put all of this together and figure out कि okay, yes, ये चीज नहीं हो रही, हम ये चीज कर सकते हैं, उससे ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स होंगे, and then in benefits की वजह से ये business plan बनेगा, because a business at the end of the day is when there is a problem and you have a solution and the guy who has the problem is willing to pay you to solve it. That completes the business case at the end of it. Simply put, बाकी सारी बातें specifics हैं, उसके details हैं.
So gap analysis at the end of the day means this. Have you found that problem and mapped it with the solution that you have, जो कि और बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं या कोई भी नहीं कर रहा. And that's what we did in terms of finding the gap and what we ultimately developed and are now in the process of deploying. जिसके ऊपर भी अभी I bet we'll be talking a bit more with you on that. Clear? Okay, thank you very much. I would like to know what were the challenges you faced while integrating and deploying IoT solutions? Okay. So, when you're working, I'll be specific in Pakistan at the moment. We are expanding to other countries, but let's stick here. Let's take this as an example. It might be a bit confusing. Different countries have different set of rules on what the issues are. So as a startup, and we are a bootstrap startup, so we haven't taken any external equity yet. So the founding shareholders put their own money in. So one of the first things we're always going to be facing in terms of a challenge with the concept this big that we're trying to materialize is the availability of the funds. So but that comes through prudent planning. So what we were able to do is अपना cash runway plan out कर सकते. The cash runway is pretty much how much money do you have after you go out of business. So we planned it. We knew how. We had an idea of the cost. We did our homework. We did okay X amount of years. We don't need external funding, and in these X amount of years, we'll be able to get to a certain level where then eventually businesses will start coming in as well, and the cash runway will start increasing and profitability will begin. And we achieved that in these last 3.5 years as well, where we're at that stage. So funding was always a challenge. This is what we faced. Trying to grow too quickly without a plan is a challenge. We had to stop ourselves from doing that. And as I said, we are a bootstrap startup. Our strategy was clear from day one that we are not going to be one of those startups okay, right out of the bat idea stage pe, even incubation stage pe, VC culture may fit in and get somebody's money by showing them revenue which is not profitable. A lot of the companies have done that, and in recent times we've seen a lot of names go out of business. So our focus was keeping it profitable, and we've kept that so far. Every financial year that we've done our audits, at the end of the day, revenues, costs, there is profit that is positive. So we are growing in that context, and those are businesses that keep it active. So keeping your costs in check while at the same time trying to get revenues, that is always a big challenge. Or eventually when you get to the stage जहाँ पे आप network rollouts या पे technology को roll out करें, तो then comes the challenge of the regulatory environment. You cannot just get up and do anything. People do it, but eventually when you get to a certain level जहाँ आप scale करना है, आप publicly announce कर रहे हैं कुछ, you have them breathing down your neck. So again, because of the background that I had in all of those 13-14 साल corporate environment, I was familiar with those. We were able to at the right time take all of those steps. So we are, by the way, licensed by the PTA as well. We're one of the 20 licensees in the country allowed to do IoT in low power wide area networks. We're the first ones who have actually materialized a network. So बाकी अभी पीछे आ रहे हैं इंशाल्लाह, hopefully will be करेंगे, but we've actually become the first mover in that context, first mover in a new technological area in the country. So उसके अपने set of challenges पर आगे निकलते हैं. Imports, because in a globally connected environment we don't make everything. Imports में easy नहीं है. आप टेक्नोलॉजी के जब उस एरिया में जाते हैं जो कि इतनी नहीं होती है, तो आपको पता चलता है कि कस्टम्स को पता भी नहीं है ये क्या है. वो अलग set of challenges हैं. That ends up increasing your costs. So ये challenges भी ongoing हैं. But at the end of the day, in a culture जहाँ पे you need to realize कि you're not alone. So we are able to reach out to the
decision makers, conveyor points, organizations. We are a member of PASHA, which is Pakistan's national IT organization. We are a member of Pakistan Software Export Board. We are a member of NICAT as well. We are a member of National Aerospace Science and Technology Park. So building those right relationships can help you solve these problems as well. So we never thought of ourselves as being alone. Just becoming part of the right organizations because the country is focused. आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बार-बार कह रहे होते हैं कि $25 billion एक्सपोर्ट्स करनी है आईटी की, एंड फ्लिप साइड पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे चीज़ें वो यहाँ बनाना शुरू करेंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें. सो दैट ड्राइव ऊपर से नीचे आ रही होती है. इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली being able to also lobby and to get have your problems identified and have the stakeholders realize the potential in what you're doing, and then फिर ये challenges और ये problems में फिर support और help ही मिलना शुरू हो जाती है. वो एक हमारे यहाँ culture है कि समझने के लिए अकेले कोई है नहीं साथ. So ऐसा नहीं है. टेक्नोलॉजी की at least जो पूरी ecosystem बना है पाकिस्तान में, it behaves in a very collaborative environment in the country. अगेन अकेले आप कुछ नहीं कर सकते. एक अकेला 2-11 पहले भी थोड़े थे, पहले भी यही बात हुई. सर ने कोलैबोरेशन की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने काफी सारी कोलैबोरेशंस की हैं. नाइकैट में रहते हुए भी पीटीसीएल के साथ भी आपका एमओयू पार्टनरशिप हुई. कौन सी ऐसी पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन रही आपके बिजनेस में जिसने आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग? Okay. So, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया, हमारी एंड गेम जो है वो इवेंचुअली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिसे मैंने कहा कि कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ पीपल है, कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस. वो ecosystem पूरा डेवलप करने में it's we are not going to be able to do it alone, and we are not doing it alone. In fact, able की बजाय वो अभी हाँ. So we saw what we could do, and we created partnerships with other businesses, other entities in areas that we could not do in a manner जहाँ पे जो चीज़ हम कर सकते थे और वो नहीं कर सकते थे, वहाँ पे भी रिलेशनशिप. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. सो दिस इज नॉट पब्लिकली अनाउंस्ड येट, बट इट विल बी इन ड्यू टाइम बिकॉज वी ऑलरेडी मटीरियलाइज्ड राइट नाउ. चलिए बता देते हैं, बट ये कि हमने अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, सो आई एम श्योर द अदर पार्टी वुड नॉट माइंड अगर हम करें. सो वी हैव साइंड और इन द प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ मेजर एग्रीमेंट विद जैज. So what are we doing there? आप जाज का बहुत सारा देख रहे हैं, उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गरज की बहुत बात हो रही थी. if you're on LinkedIn or on social media, I think even उनके वो ads वगैरह भी और clips भी चल रहे होते हैं. So Garage is the name of effectively their data center. So the architecture that is now readily deployed in the country, this is all recent, पिछले 1-2 महीनों में ये complete हुआ है. गरज के साथ पार्टनरशिप में डेटा सेंटर पे जो कि जिसमें वो फीचर सेट्स मौजूद जो होने चाहिए थे, सिक्योरिटी रिलेटेड, स्टोरेज, कैपेसिटी, सपोर्ट, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपने देखना होता है जो डेटा सेंटर का है. उसके ऊपर हमने अपना जो हमारा प्लेटफॉर्म है आईओटी का उसको होस्ट किया. So we use that infrastructure. That is a very core partnership about using cloud infrastructure to be able to provide services. उस पे host किया. जैज के साथ एडिशनल पार्टनरशिप की कि जहां पे हमने सेल्युलर बेस्ड आईओटी नेटवर्क्स क्रिएट करने. आईओटी नेटवर्क भी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, एलपी वैन नेटवर्क, सेल्युलर नेटवर्क्स, ब्लूटूथ नेटवर्क्स, वाईफाई पे चल रहे होते हैं. सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो वी आर यूनिक इन द सेंस दैट वी अ सिंगल प्लेटफॉर्म कैन डू all of this. There isn't other platform in Pakistan that is able to do all of this, right? So we're unique. Like truly unique का मतलब होता है कि we are the only ones able to do that. Jazz saw that in us, in fact, and they have been so supportive that they made their infrastructure available. They have made their cellular infrastructure available. अपने towers पे जाके हम जाके दूसरी चीजें अपने दूसरे और radios लगा दें. सिम कार्ड्स उन्होंने हमें दिए, जहाँ पे अभी हमने अपनी फ्लीट मैनेजमेंट जो पूरे टेस्टिंग की है ऑन कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में सेट हुआ हुआ. सो इट्स अ ट्रूली
गेम चेंजिंग पार्टनरशिप एंड 2025 में आप देख रहे होंगे इन पार्टनरशिप विद जाज ये जो नेटवर्क रोल आउट्स हैं ये काफ़ी सारे हो रहे होंगे और ये डिवाइसेस जो नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है ऑन टॉप ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मटीरियलाइज काफ़ी रियलिटी और पुश के साथ हो रहा है बिकॉज़ ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स अंडर वे ग्रेट गुड टू नो अच्छा हम अगर बात करें ऑटोमेशन की या ऑटोमेशन ऑफ आप कह रहे हैं कि डाटाबेस की तो उसकी इंक्रिप्शन के लिए व्हाट आर द मेजर्स दैट यू आर टेकिंग राइट सो सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट यस इसमें कोई शक नहीं है एट द एंड ऑफ द डे और इसलिए मैंने बात की कि अगर आप में से कभी इवेंचुअली कोई प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करें so it matters where that platform is hosted और इसकी सिक्योरिटी क्या है और वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो इफेक्टिवली आती है उस होस्टिंग पार्टनर के साथ सो जाज टेक्स इट्स अ बिग बिजनेस एंटिटी उसके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं लेकिन इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ दैट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड स्टेज में हमारा जो अपना प्लेटफॉर्म जिस लॉजिक पे डिजाइन किया गया है उसमें सर्टेन इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर्स ओके ठीक है बहुत टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता उसके थर्डली जो हम नेटवर्क प्रमोट कर रहे हैं जैसे मैंने कहा एलपी वैन लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क्स उसकी एक कैटेगरी है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क लॉरा वैन concepts such as AES 128 encryption, message integrity codes के जो concept हैं which make the data transfer from the sensor all the way to the user to end encrypted formats में आ रहा हो तो वो ये काफी सारे features they are built into the system. Okay. और again as I said you know even on the cellular side जब हम partnership करते हैं तो वो cellular networks की security की तो वो already the cellular network providers have taken care of that so that comes built into what we're trying to do. Okay. But despite that like anything else in the world I mean whenever you're going digital जो एक अलग set of challenge security का रहता है attacks का रहता है वो इस context में भी है वो रहेगा and we have to deal with it and we continue to deal with it. बिल्कुल ठीक है अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं ये आपसे जानना चाहूंगी या बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस क्योंकि ये यंग जनरेशन है और ऑब्वियसली इन्होंने या स्पेस इकोनॉमी में आईओटी में या व्हाटएवर बिजनेस जो जिसमें भी ये स्टेप इन होना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी स्टार्टअप और बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस मैं चंद बातें कहूँगा based on what my experience is and different people have different experiences with potentially similar successful outcomes so there is no one advice or one set of advice which is absolutely right but what I can share is my experience with you for me I always wanted to have my own thing just go to the my own startup my own set of ideas things that I wanted to do on my own so but I had no one around me in terms of mentorship level पर जिससे immediately बंदा सीख लेता है वो चीज़ implement करना शुरू कर देता है they were I mean that doesn't mean कि बहुत सारे लोग नहीं थे जो career में आगे थे but career में वो किसी ने successfully किया नहीं तो मेरे circle में ऐसा था नहीं so what I determined was कि I need to know more so I went into the corporate sector and जो मेरी वहाँ career growth रही वो I jumped between roles so I was in technology I learned products I was in commercial management I tried sales and business development and eventually leading an organization and taking it to the IPO stage by the time we went to the IPO I was employed there in the job कर रहा था but by the time we went to the IPO my division was 70% of the company's revenue so supply chains कैसे build होती हैं customers कैसे लाते हैं business plans कैसे बनते हैं it took me 13 years at least 13 and a half 14 years to go through all of that and then I felt I was completely ready and it also helped that I was able to make some money on the way so I could bootstrap it along with some other partners so that was my path I planned it I was very self-aware कि मुझे क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती है क्या मैंने सीखनी है क्योंकि एक स्टार्टअप
when we founded Dynasys, right out of the bat, I was able to implement all of those approaches, जिससे वहाँ पे success आ सकी थी. So कुछ लोग होते हैं बहुत brave होते हैं, right out of university, they have an idea, ज़बरदस्त, they understand, और ये जो expertise उनके पास खुद नहीं है, they have funding available, bring on people और वो cover कर देते हैं. It happens, it works successfully, but those of you जहाँ पे मेरी वाली situation for example, and you need to learn and get there, that it also happens, right? So I was able to materialize that, learn that, और उसके बाद वो different set of और challenges आते हैं regarding your planning, your confidence, adversity से deal करना आना चाहिए. वो सारी चीजें भी because I had all of that experience going on क्योंकि stressful environments में आप businesses कर रहे होते हैं, तो वो ढिठाई जो है क्या ना वो पैदा हो जाती है अंदर, और ढिठाई जो है ना वो चाहिए, उसके बाद होगा नहीं. ठीक है, there are going to be bad days, more bad days than good days in the beginning. There will be all those points जहाँ पे कि अच्छा बहुत सारे लोग doubt करेंगे. Your parents might not say anything negative, but the look on their faces on a bad day would be there. Not that I had, because I was old and self-sustained by the time I came in. Like मैंने बहुत सारे अपने ये दौर younger startups with younger founders देखा है कि वो कुछ set of challenges हो रहे होते हैं उनके. But ultimately, irrespective, if you've decided it, if you believe in the idea that you're working on, and you believe you have a plan, stick to it. Eventually it's going to happen. ठीक है, if it's good enough, it's going to happen. And if you're good enough to make it happen, it's going to happen. And to be good enough to make it happen, please realize that आपको नहीं आता. So you need to learn. और वो जो consistent, constant learning है, वो then you can always find ways to do it. You can have a mentor, you can join the corporate sector, find out क्या होता है उधर, कैसे हो रहा होता है. कुछ अरसे के लिए there are other ways to do it. You can gaps को cover. You can have other co-founders, or you be a co-founder, whatever the case may be. But learning never stops. And again, मैं घूम फिर के बार-बार एक ही word पे आ रहा हूँ, ढिठाई. Just that is at the fundamental core of it all. If you waver, you're going to fail. And we don't waver at all in what we plan and what we do. We don't waver at all. We know where we are going. We are very clear. Right, ठीक है. Thank you very much, Alias sir. हम लोग इसको closing note की तरफ लेके जाते हैं, but before that, अगर आप में से किसी को कोई question है, जी please. जी. Chalo, we're both alumni then. अच्छा, because we were अभी, as I said, we have to remember that even हमें भी अभी, as I said, I keep saying 3 years, 8 months हुए, so we haven't hit that stage where we have been around for a long time, और हम अपनी fully startup stage से निकल के जो है ना outright big corporation mode में चले गए. So I can relate to what you're saying, absolutely. In terms of जो आपका primary question, it's about visibility and approach, right? How we established our visibility and our approach. One of the things that has definitely happened for me personally, and मैं वो experience पहले share कर देता हूँ, then maybe I can give you a few tips. हमारे case में, as I said, we did not. I'm the founder, I said, me and the co-founders जो कि co-founding team है.
we did not immediately, right out of university, start our own business. And the reasons मैंने आपसे share किए, we don't have the idea at that point. We knew we wanted to do something, but it needed to be tweaked and we needed to learn. तो जो हमारे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में गुजारा, जो कि रिलेशनशिप्स बनाई, that helped us and it helps us a lot because in that context we have delivered billions and billions of worth of projects by that time. So the credibility was there. और ठीक है वो कर रहे हैं तो आप ये कर रहे हैं, तो obviously we were able to and still are able to open doors because of our past credibility. Credibility is the key term here. आपकी credibility क्या है कि कोई अगला आपसे बात करे. उस credibility को मजीद hammer in करने के लिए, मजीद establish करने के लिए, to get the big organizations to take you seriously, we, other than our own past credibility, we became part of organizations like NICAT, NASDAQ, PASHA, PSEB, because in addition to their core functionalities, one of the functionalities that they have are is advocacy. That's what they do. NICAT फंसे हुए हैं, डायरेक्टर उधर बैठे हुए हैं, आप फोर्थ कोहॉर्ट में आ गए ना, you want something, walk up, आपकी specific case में, because you said you're a part of cohort 4, he's there, Sara is there, ये वाले specific customers हैं, इनसे मैंने बात करनी है, intro करा दें. Everybody takes Nike seriously, and when you're a part of NICAT, you're taken seriously. Similarly, if you're a part of the National Aerospace Science and Technology Park, reach out to their business development team. They take you seriously because it is part of their job and part of promoting the purpose of their own creation. यहाँ पे जितने startups हैं, उनको support करना है और right connect करना है. By virtue of being part of NICAT, you're part of the bigger Nike ecosystem, जो national incubation centers हैं, वो भी country wide हैं और उनकी global access है. So customers in हैं या बाहर हैं. कल हमारे साथ बड़ा interesting काम हुआ. Out of nowhere, the Pakistan embassy in Saudi Arabia promoted Dynasys on their social media pages. I'm not sure where it originated from. We didn't do it. Okay. So for us, this was very amazing because हम अपनी projection, which is something that is also required. Credibility comes over time. When you're doing something, learn to project it on social media channels or on your website. People see that. And the more we did it, the more credibility came in and the more intrigue came in and people started reaching out to us. And then वो in combination with जो आप जिन institutes का part हैं, उनको अगर आप fully utilize नहीं कर रहे, उनके resources को utilize नहीं कर रहे, a lot of access. I'm telling you, a lot of access. And it is the mission to help you. And then आपको अपने social पे project करें और आप इन strategies को merge कर लें तो eventually this challenge goes away. जैसे मैं भी आपको एक बात बताता हूँ. Telenor is a massive company, right? Okay, fine, that will be acquired by DTC, whatever the case may be, but that entire entity is still going to exist in one form or the other. अभी Telenor के velocity program में उन्होंने आप लोगों को reach out किया. और I don't know if you saw that email or not, but NICAP ने specific जो historical है या current है उन्होंने saw fit उनको वो चीजें specifically भेजी, agriculture related कुछ issues solve करने. ये मैं बहुत specific example दे रहा हूँ. Reached out to us, उसमें जो challenges देखे, we saw that we could do something about it and we introduced ourselves to और उनका भी जवाब आया हुआ कि मैंने कहा कि आपके पूरे सारे में IoT कहीं गए हैं, बाकी बहुत AI डैशबोर्ड्स बना दिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सिंगल स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, but there's no idea we can solve still in that context. आज सुबह email, yes please do that. So I would not have known about it, but because I'm part of larger organizations, they're constantly making these introductions. So इस चीज का फायदा होता है सारे. और स्टार्टअप आप छोटे होते हैं, जिस तरह हम जिस तरह के स्टार्टअप हैं, बहुत बड़े VCs हैं, equity, अगर आप स्टेज, because those stages be different, you have to keep in mind, but I'm understanding that you're not at that stage. So
funding stage में you're too small to try and do it on your own, depending on कितने resources हैं. You may be super rich, have founded a startup and you have hundreds of millions in the bank. कुछ चंद मीडिया हाउसेस को करें आपके आ जाएंगे या एडवोकेसी ग्रुप्स पूरे एग्जिस्ट करते हैं, उनको हायर कर ले आ जाएंगे. बट इफ यू आर नॉट एट दैट स्टेज देन दिस इज द प्रोसेस टू गो थ्रू. दिस इज हाउ वी डू इट. दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश्ड आवरसेल्व्स एज वेल के पीटीसी और जैज और इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हमारे साथ पार्टनरशिप करें, बिकॉज देन वी वर एबल टू डेमोंस्ट्रेट कि ट्रूली यूनिक काम है और ये मर्ज हो सकता है जो आपके काम है साथ, एंड वी कैन क्रिएट समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली new and will take at least this country by storm in terms of technology. क्या हो गया? So best of luck to you in that. I hope that answers your question. Thank you very much. किसी का कोई सवाल? Last question. जी please. देखिए आपका प्राइमरी क्वेश्चन फंडिंग के रिलेटेड है, राइट? अच्छा, सो अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ जहां पे आपने पहले वो वाली बातें की ना, आइडिया भी अच्छा है, वो एग्जीक्यूट भी हो सकता है, वो सारी चीजें, तो ये बात आपने प्रूव करनी है. यू हैव टू सेट स्पेसिफिक गोल्स इन स्टेजेस. इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले MVP का लफ्ज यूज किया था, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ठीक है, आइडिया स्टेज से MVP स्टेज तक वो यू हैव टू प्रूव इट, बिकॉज यू आर सेइंग ऑल ऑफ द वर्ड्स ना कि वो आइडिया है, वो उसकी मार्केट भी है, प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, बट दैट्स अ क्लेम यू आर मेकिंग. इज इट ट्रू? दैट इज व्हाट people outside your organization are going to decide for themselves after looking at what you are telling them, uska potential, uski market, uski research, wo sari. So step one में be sure ke that is true what you're saying. ठीक है. Next step पे जो आप आगे आते हैं, जैसे हमारे केस में भी नाइकैट में जब eventually हम पार्ट बने cohort 2 का, so we had the MVP stage and then we became part of it. और फिर हमने पार्टली इस पूरे टाइम एंड प्रोसेस में ये वाली डिस्कशंस की कि कैन यू इंट्रोड्यूस अस टू पीपल. आपको पता बीच में हमें ऑफर्स नास्डैक के अंदर से आई to be able to put money into the ideas that we're doing. Because we can demonstrate what we're doing, and we did demonstrate. So eventually, if it's good enough, organizations like these will introduce you to the investors, will introduce you to potential VCs as well. I keep saying they are all connected. So when you're becoming part of these broader ecosystems, you have to take the maximum advantage. और आपको अगर फंडिंग्स चाहिए, अगेन इट्स डाउन टू योर मॉडल. हमारे मॉडल में हम इक्विटी डाइल्यूशन अप टू अ सर्टेन पॉइंट नहीं कर रहे और नहीं करेंगे. हमारा कस्टमर फंडेड मॉडल है. वी नीडेड कस्टमर्स, वी नीडेड क्रेडिबिलिटी टू गेट टू दोज कस्टमर्स. हमें बैक कर दे, कोई लेटर लिख दे ताकि क्रेडिबिलिटी हो, कॉल कर दे, बता दे हमारे हैं, या हमें ये पूरी स्पेस, ये जो पूरा है ये दे दे, मैं यहाँ ला के जो है ना पूरा दिखा सकूँ कि यहाँ में सिस्टम के पूरा पूरे बैक पे क्रेडिबिलिटी होती है ना, अकेले नहीं, छोटे नहीं है वो. और ये है ऐसा, असल में भी ऐसा है. सो दे हैव अ बिग लिस्ट ऑफ investors, they have a big list of people who can fund you, depending if that is what you need. You need to be able to access that, and one of the best ways you can do it is actually tell them that you have what you claimed is actually true in terms of your idea and all that. I need to make one thing very clear. NICs चाहे नाइकेट है या कोई भी है, we don't provide any funding. डायरेक्ट फंडिंग हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना हम आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे. वी आर द वंस जो
एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग एजेंसीज टू गेट यू पीपल कनेक्टेड विद देम. मेरे कहना है उनको बहुत लंबी लिस्ट है. ठीक है, get access to that list by showing your credibility and they'll take you. वो उठा के भी ले जाते हैं. ठीक है, धक्का भी दे देते हैं. धक्का भी देते हैं. प्लीज. हाँ, यहाँ जाए, यहाँ ले आते हैं. कितने तो बैंक्स के लोग और कितने सेशंस हमने कितने लोगों को दे, इतने लोगों से पोटेंशियली आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. वाव तो उनको आपको खुद करना है अल्टीमेटली. ये याद रखिएगा. So that's Thank you very much, Arif sir. Before closing out, I would like to invite Abdul Hafiz Qazi, Director Islamabad Campus ICMA, to give a short keynote. Sir, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, please. First of all, may all have a big round of applause for Ali Prasad, who has actually informed us and enlightened us about his journey, right from, where he started, how basically he's gone through all the corporate experience, and then after learning so many, things, whether IoT or the other things, commercialization, he actually, mashallah, sir, we are very thankful to you for providing us this information and all this experience, and we are very blessed to actually share your experiences, and we are really proud of you, the way you actually done. And special thanks to Ms. Nurul Huda for having us here in ICAT. 3-4 बातें करूंगा बस 2-4 मिनट के लिए. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, मेरी नजर में 2 तरह के होते हैं. एक वो है जो कि बिल्कुल यूनिक आइडियाज हैं, द थिंग डज नॉट एग्जिस्ट एंड यू एक्चुअली योर ब्रेन क्रिएट्स इट. जिस तरह मैम ने बड़ी जबरदस्त किस्म के एग्जांपल से आपको समझाया है, एंड आई थिंक दैट वाज जस्ट स्पॉट ऑन. कि मेरी दोस्त को नजर नहीं आता था, उसने कहा मुझे अफसोस भी और नजर नहीं आता. फिर मैंने कहा अच्छा चले कोई शीशे पे काम करते हैं, कोई ग्लास, और इस तरह से करते करते ऐनक बन गई. ठीक है, ग्लासेस बन गई. कहने का मतलब है कि ये दिस इज बेसिकली द टिप शी गेव यू, लिटरली $1 million टिप, कि एनी स्टार्टअप कम्स विद द प्रॉब्लम. अगर कहीं पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो आपका स्टार्टअप हो सकता है. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टार्टअप नहीं हो सकता. एज सिंपल एज दैट. देखिए, जहां पे रेस्टोरेंट नहीं है वहीं पे लगेगा ना, जहां पे लोगों की जरूरत है वहीं पे होगा. ठीक है, जहां पे कोई जिस तरह एग्रो बेस्ड है, जहां पे कोई खेत हैं वहीं पे आप अपनी फर्टिलाइजर भी सेल करेंगे, पेस्टिसाइड भी सेल करेंगे, और उनको फर्दर भी चीजें फार्मिंग भी करेंगे. तो जहां पे कोई ना कोई इशू होता है वहीं पे स्टार्टअप होता है. दूसरी चीज ये है कि नॉट नेसेसरली यूनिक आइडिया के साथ आप एक स्टार्टअप करें. ठीक है, सलमान वासे का नाम किसने सुना हुआ है? Very good friend of mine. We met about 20 years ago. I met him while I was traveling to London, and he was actually next to me. तो करते I mean, we go way back. Chai Khana is not a unique product. It's just one of the restaurants. Salman Wase is basically running Chai Khana. It's just one of the restaurants out of thousands. इस्लामाबाद में जाए ना 1969 और यम एंड this and that. ये कोई नई चीज नहीं है तो उन्होंने कोई नया कोई मिसाइल बना लिया या उन्होंने कोई ड्रोन बना लिया था. लेकिन क्रिएटिंग यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट नहीं होगी, लेकिन आपने कोई ऐसा, आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं कि कोई किसी गली मोहल्ले चौक में कोई ना हो किसी भी नाम के साथ. मेरा ख्याल है कि इट्स वन ऑफ द वेरी सक्सेस स्टोरी. ठीक है, केएनएन देख लिया, बहुत सारी चीजें. नहीं, अब ये नहीं है कि चिकन नगेट्स आपने कभी नहीं खाए थे या वो चिकन वो कहने का मतलब. अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि शायद आपने भी, मेरा ख्याल है कि वेरी पिंचिंग क्वेश्चन फॉर यू गाइस एज वेल, कि 30-40-50% में भी इससे भी ज्यादा ओवरवेलमिंगली आइडिया से पहले वो फंडिंग की बात पूछते हैं, पैसे कहां से मिलेंगे. ठीक है, स्टार्टअप स्लो, स्मॉल, मीडियोकर, और वहां से रिचर्ड ब्रांसन का नाम किसने सुना हुआ है? सर, you know how Richard Branson started? He is one of the billionaires.
ठीक है ना, वन ऑफ द बिलियनर्स, हिज कॉन्ग्लोमरेट operates more than 70 industries, you name it, petroleum, space, trains, you name it. Sir Richard Branson, पता है कहां से स्टार्ट किया था? ये जो उस जमाने में वीसीआर होता है ना, पुराने वक्तों में वीएचएफ कैसेट होती थी मोटी सी, वीसीआर के अंदर जाती थी और आप फिल्म देखते थे। उसने एक छोटी सी दुकान सेटअप की थी लंदन में, और वो रेंटल, ये वो अभी भी वो कहते हैं कि यार मैं 50 पेंस कैसेट जो है ना वो रेंट पे देता होता था, 50 पेंस वो रेंटल पे देता था 3 दिन के लिए कि जाके इसको मूवी को देखो। आप लोगों ने भी कुछ, आपका बहुत यंग जनरेशन हो ना, तो मेरे जैसे 2-4 बंदे बैठे हुए, शायद आपने भी कभी रेंट पे वीसीआर की वो कैसेट्स ली होंगी, ठीक है। वहां से उस बंदे ने स्टार्ट किया, and his fortune is worth over $100 billion. Start small, पैसे पर नहीं देखे कितनी फंडिंग हो जाएगी, कोई ना कोई आपका आइडिया ले लेगा। दूसरा, आप में से एक प्रीडोमिनेटली आईसीएमए का ग्रुप है, तो 1 मिनट के लिए मैं आपकी जरा अटेंशन सीख करूंगा। आपने कभी, अच्छा प्रॉब्लम पता है कहां से पता चलती है? When you are very good observers, आप कहीं पे भी जाते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ जाती है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो ना, फाइनेंस बैकग्राउंड के हो ना, यू नो अबाउट द हर्डिंग बिहेवियर। हर्डिंग का पता है? और भेड़ चाल, हर्डिंग, हर्ड किसको कहते हैं? वो जो रेबड़ होता है। हर्डिंग बिहेवियर बिहेवियरल फाइनेंस में कॉन्सेप्ट है। हर्डिंग बिहेवियर क्या होता है कि जनाब बैरियर टाउन ने फाइलें बेचनी शुरू की और पूरी कौम पीछे लग गई, फाइलों पे फाइलें, फाइलों पे फाइलें खरीदे जा रहे हैं, फाइलों, ऐसे ही होता है ना, ठीक है ना। रियल एस्टेट पे गए तो उसी पे ना, किसी ने वो कहा कि जी अब ये काम करना शुरू कर दें, वो काम करना शुरू कर दिया, सोचे समझे बगैर, सोचे समझे बगैर। स्टार्टअप्स आप हर्डिंग बिहेवियर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने ना, दिस इज द की, कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। वो भाई हो सकता है उसके पास कोई और सोच हो, लॉजिक हो, अपना हो। Startup comes from within, and it comes from your real observation. यहां नाई कहते हैं ना, ये ज्यादातर ये डिजिटल आईटी और टेक्नोलॉजी उस चीज में ना ये करते हैं। कभी आप सुपर मार्केट्स में गए हैं, बड़ी सुपर मार्केट्स में मेट्रो हो गई, सेव मार्ट हो गई, तो कभी देखे कि व्हाट कैन यू इंट्रोड्यूस इन देयर, वहां पे क्या स्टार्टअप हो सकता है? मैं आते हुए सोच रहा था मैं वहां क्या बात करूंगा, तो मैं ऐसी चीजें चल रही थी। होता है कभी सुपर मार्केट्स में देखा है कि आज हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोसरी लगी हुई है, यहाँ पे फ्रूट एंड वेज है, यहाँ पे क्लोथ्स है, यहाँ पे 2-4 महीने के बाद ना वो शेल्फिंग चेंज कर देते हैं, इधर की चीजें इधर ले आते हैं, कुछ इधर की लेके इधर ले आते हैं, जस्ट टू चेंज। मुझे समझ आता है घर में जो खवातीन होती हैं, वीडियो अपॉलॉजीज, वो एक ही कमरा होता है, बेडरूम है ना, तो बेड इधर पड़ा हुआ है, तो बस 4-6 महीने बाद आता नहीं यार ये कमरा बोर हो गया, बेड को उठा के इधर रख सेटी सोफा को उधर कर दे। तो इसी तरह ये एक उनका एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं। कभी आपने डिजिटल ट्रॉली का नाम सुना है? डिजिटल ट्रॉली, कि जो ही आप एंटर, मैं मेट्रो कभी नहीं गया, वहां उसके साथ टैबलेट लगी हुई है, उसमें पूरे उसका मैप पड़ा हुआ है मेट्रो का या किसी भी सेव मार्ट का, व्हाटएवर पंजाब कैशर कह रही, और मैं कहता हूं जी कि बस मैं उसमें लिस्ट में ना टिक 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 टिक, मैंने पोटैटोज लेने हैं, मैंने ये दाल लेनी है, चावल लेना है, फलां लेना है। वो बेस्ट एफिशिएंट मैपिंग से वो मुझे वहां पे वो खुद लेके जाती है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, आइडियाज जमाने में है। अब पता आज बिटकॉइन कितने का ट्रेड हुआ है? $90,000 टच कर गया। फाइनेंस बैकग्राउंड से हो ना, कभी आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑडिट का नाम सुना? ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन पे आपने, जिस तरह सर ने कहा है ना, लर्निंग, जितनी आप लर्निंग करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, आपके पास यूट्यूब है, ये सारी चीजें हैं, वो कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो कि ना आपको आगे लेके जा सके। तो मैम विद योर परमिशन इंशाल्लाह वी विल कीप ब्रिंगिंग वन एवरी नाउ एंड देन, कि इन्हीं में से हो सकता है कोई आपका अच्छा एक स्टार्टअप जो है ना वो क्रिएट हो जाए। तो सर, इट वाज एन ऑनर टू सी यू,
And guys, thank you so very much for joining us here. Inshallah, keep thinking. You know, I can see, you know, you have a spark. Okay? Thank you so very much. Thank you. Thank you very much everyone. Thank you very much sir. हमजा kindly अगर इनको virtual करवा दें, visit करवा दें, please.